Dear students, today in this presentation we will be discussing about the refraction of light and the laws of refraction. During the previous presentations we have discussed about the reflection, the laws of reflection, then we have discussed about the spherical mirrors, that is the concave and convex mirrors. During the previous presentations we were discussing about the light when light was incident on any object wherefrom it bounces off that object of the surface. Now in the second part we will be discussing about the bending of light, that's refraction, when light will pass through the transparent mediums, when light will be transmitted through the transparent mediums. So in this presentation we will be discussing about that is the refraction, and then we will also discuss about the laws of refraction, which are also known as the Snell's laws. Now you have seen, जब हम एक पेंसिल डालते हैं किसी भी पानी के गिलास में, अगर आपका गिलास ट्रांसपेरेंट है, एट द इंटरफेस ऑफ द टू मीडियम एयर और वाटर, वहाँ पे आपको लगता है कि जो आपका पेंसिल है दैट्स ब्रोकन, वो टूटा हुआ है, या आपको लगेगा कि ये बेंड हुआ है. सो एक्चुअली जो पेंसिल है वो बेंड नहीं होता है. इट्स एक्चुअली बिकॉज ऑफ द बेंडिंग ऑफ लाइट. लाइट जो है वो बेंड हो जाती है. उसके लिए रीज़न ये है कि लाइट की जो स्पीड है वो डिफरेंट मीडियम्स में, जहाँ पे लाइट ट्रांसमिट होती है ट्रांसपेरेंट मीडियम्स में, वहाँ पर लाइट जो है उसकी स्पीड चेंज हो जाती है. वी कैन से देयर इज़ अ रेजिस्टेंस टू द light in the different medium, so the speed of light does not remain constant in different medium. एयर में जब हम कंसिडर कर लेते हैं कि वी कंसिडर एज the speed of light around 3 lakh kilometers per second in both air and vacuum. But when the speed of light, when we consider it in water, it sums around 2 lakh and 25,000 kilometers per second. So there is change in the speed of light in the water medium. So the pencil looks bent. Actually it's the at the interface, it's not the pencil, it's actually the bending of light. जब हम इसको देखते हैं तो हमें लगता है कि पेंसिल जो है वो बेंड हुआ है, बट एक्चुअली इट्स बिकॉज ऑफ द बेंडिंग ऑफ लाइट दैट वी सी कि पेंसिल जो है वो हमें लगता है कि वो टूटा हुआ है एट द इंटरफेस ऑफ द टू मीडियम. सिमिलरली अगर हम लेज़र बीम पास करें या हम ये कहें कि लाइट पास करें थ्रू ए ग्लास स्लेब, व्हाट वी सी द पाथ ऑफ द लाइट जो है वो हमें लगता है इस इनसाइड द स्लेब द पाथ डज नॉट रिमेन द सेम. इंसिडेंट लाइट जहाँ से आती है वो लाइट जो है वो बेंड हो जाती है इनसाइड द स्लेब, ग्लास स्लेब. इट्स ए क्यूबॉइड ट्रांसपेरेंट made up of it's a cuboid structure made up of transparent glass. So the light जो है इसके अंदर आप देख सकते हैं it bends inside this transparent material. So हम ये कहेंगे कि जब लाइट ट्रैवल करती हैं from one medium to another medium which are continuous, जब ये इस one medium to another medium ट्रैवल करती है एट द इंटरफेस, इन दो जहाँ पर ये दो मीडियम्स जो हैं इन कंटैक्ट हैं, वहाँ पर लाइट जो है वो बेंड होती है, और उसी बेंडिंग ऑफ लाइट को हम कहते हैं दैट्स नोन एज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. सो व्हेन द इंसिडेंट लाइट जब ओब्लिकली हम इस स्लेब पे डालते हैं, द लाइट इनसाइड द स्लेब एट द इंटरफेस ऑफ द मीडियम, वहाँ पे जहाँ पे ये दो मीडियम्स एक दूसरे के कंटैक्ट में हैं, वहाँ पर लाइट जो है वो बेंड हो जाती है, और इसी बेंडिंग ऑफ लाइट को हम कहते हैं इट्स नोन एज द रिफ्रैक्शन. Now the reason for this bending of light is because of the different speeds of light in different medium. In case of air we consider and vacuum we consider it exactly as 3 lakh kilometers per second. Then in water we consider it around 2 lakh and 25,000, and in glass at around 1.97 lakh kilometers per second.
Now one more thing here, you see the refractive index. Refractive index we will discuss later also. Refractive index is simply जब हम किसी भी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट लेते हैं और उसको हम कंपेयर करते हैं विद द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम. सो अगर हम वाटर का लेंगे इट विल बी 3 लाख डिवाइड बाई 2,25,000 एंड समथिंग. इस तरह गिलास का लेंगे तो आप लेंगे स्पीड ऑफ लाइट डिवाइड बाय द स्पीड ऑफ दिस स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाय द स्पीड डिवाइड इट बाय द स्पीड ऑफ लाइट इन गिलास. इस तरह आप अगर डायमंड का लेते हैं सो इट विल बी, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा डायमंड का स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम और एयर. इसको आप डिवाइड करेंगे बाय द स्पीड ऑफ light in case of the diamond. So the bending of light occurs because of the different optical densities, because of the different speeds of light in different medium. In different medium the speed of light varies, so the optical densities जो है mediums की वो change हो जाती है, जिसकी वजह से we see there is bending of light in the transparent medium. Now so we can define it simply that refraction is the bending of light when light travels from one medium to another medium at the interface of the two medium. जहाँ पर दो mediums एक दूसरे के साथ in contact में होते हैं वहाँ पर there is deviation in the path of light और उसको हम कहते हैं that's known as the refraction of light. So we have now two cases. One we have already discussed, that's the reflection of light when light जो है वो strike करती है इंसिडेंट obliquely करती है किसी भी इस opaque object पे, there will be a reflection of light. And when light falls on any transparent material तो वहाँ पे जो है light transmit होती है लेकिन उसकी bending होती है, उसको हम कहते हैं that's known as the refraction. So जब opaque object पे light जब लाइट जो है वो किसी ओपेक ऑब्जेक्ट पे जिस ऑब्जेक्ट के थ्रू लाइट पास नहीं हो सकती है वहाँ पे होगी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ये सब चीज़ें हमने पढ़ी है. इसी तरह अब अगर लाइट अब उस ऑब्जेक्ट पे इंसिडेंट हो रही है विच इज़ ट्रांसपेरेंट, तो वहाँ पे जो है लाइट जो है that will be some part will be reflected and most of the part will be of the light will be transmitted through the medium. यानी कि मीडियम के थ्रू अगर आपके पास पानी है पानी के थ्रू लाइट पास होगी, अगर आपके पास गिलास स्लैब है तो गिलास स्लैब के थ्रू लाइट पास होगी. तो उस when light is transmitted through the this transparent medium तो वहाँ पर bending of light होती है और उसी को हम कहते हैं refraction of light. So from opaque objects there will be reflection of light and from transparent objects or transparent medium there will be a refraction of light. So we define it simply now, bending of light when light travels from one medium to another, but the medium must have different optical densities. इनका refractive index different होना चाहिए तब होगी refraction of light. Now if we take a glass slab and इस पे हम डालेंगे we will consider an incident ray on the glass slab obliquely या हम कहेंगे slanting होगी at the glass slab. तो लाइन जो है लाइट जो है that will penetrate through, that will be transmitted through the glass slab और गिलास स्लैब में ट्रांसमिट होने के बाद जब बाहर आएगी it will also get when it will come emerge out of the glass slab then we call it as the emergent ray. So here we have one medium air, second medium we have glass slab. Speed of light in air is more, speed of light in glass slab is less, so there is difference in the speeds of light in two medium. So we can say the refractive indexes of two mediums are different, so there will be bending of light. The light which falls on the glass slab, जो incident ray है, जो incident ray जो पड़ती है किस पे, glass slab पे, at the point
जहाँ पे ये दो मीडियम्स जो है इन कंटैक्ट विथ ईच अदर हैं, देयर विल बी बेंडिंग ऑफ लाइट। जो लाइट आ रही है उसको हम कहते हैं सिंपली इंसिडेंट रे, ठीक, या इंसिडेंट लाइट। सो वी विल कंसिडर वन रे हियर, इंसिडेंट रे। इट बेंड्स इन द स्लेब, गिलास स्लेब ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, इसके अंदर ये बेंड हो जाती है, उसको हम कहते हैं, जो पार्ट इसका बेंड हुआ है इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे, दिस नोन एज रिफ्रैक्टेड रे। और जो अब ये रे इस गिलास स्लेब से बाहर आ रही है, दिस इज नोन एज द इमर्जेंट रे। We have the incident ray, we have the refracted ray, and we have the emergent ray. Now if we will draw a normal to the point of incidence, जहाँ पे incident ray strike करती है, the angle formed between the normal and the incident ray will be the angle of incidence. Similarly refracted ray और normal के दरमियान जो angle बनेगा, that will be the angle of refraction, that will be the angle of incidence formed between the incident ray and the normal, and the angle of refraction between the refracted ray and the normal. These two angles are not equal, as in the case of reflection, वहाँ पे हम देखते थे कि angle of incidence is equal to angle of incidence is equal to angle of reflection, but here angle of incidence is not equal to the angle of refraction. So now inside this slab what we have seen that the light ray, incident light ray, after passing through the glass slab, ये light ray जो है इसने अपनी पाथ जिस डायरेक्शन में आ रही है वो इख्तियार नहीं की, बल्कि it bended, इसने deviate हुई, इसकी पाथ ये bend हुई towards the normal, और इस deviation को, इस this change in the direction of this light ray inside the glass slab, ठीक है, this is known as the refraction. So refraction simply is the deviation in the path of light when light travels from one medium to another medium. जिस मीडियम में इंटर कर रही है वहाँ पर इसकी जो पाथ हैं वो डिविएट हो जाती हैं, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं, दिस phenomenon is known as the refraction. Now we know that when the light travels from the one medium to another medium through transparent mediums, then there is the bending of light. Now consider if light travels from air to glass, यहाँ पर एक मीडियम हमारा एयर है, इसमें स्पीड लाइट की ऑप्टिकल डेंसिटी एज कम्पेयर टू गिलास इसकी कम है एज कम्पेयर टू द गिलास। सो एयर में स्पीड जो है लाइट की ज़्यादा है एज कम्पेयर टू गिलास। सो अगर एयर से लाइट रे आ रही है, ठीक, इट विल बेंड इनसाइड द गिलास स्लेब, देन इट विल इमर्ज आउट from the glass slab. So incident ray, refracted ray, and the emergent ray here, you see they are all in the in one plane, and also the normal. This is actually one of the laws of this Snell's laws, that's the law of this refraction. अब बात करेंगे हम कि अगर ओब्लिकली अब जो इंसिडेंट रे हैं वो पड़ रही हैं ग्लास स्लेब पे, अब ये एयर जो है ये एक रेयरर मीडियम है, गिलास जो है वो डेंसर मीडियम है। जब रेयरर मीडियम से, ये रेयरर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, लाइट ट्रैवल करती है बट इट इज ट्रांसमिटेड थ्रू द गिलास, ये बेंड होगी। विल इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल? इट विल बेंड जब लाइट ट्रैवल करती है फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। आप देख सकते हैं लाइट की पाथ जो है वो ये होनी चाहिए इन दिस डायरेक्शन, लेकिन लाइट जो है वो बेंड हो रही है टुवर्ड्स द नॉर्मल विच इज परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, नॉर्मल परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। सो जब लाइट ट्रैवल करेगी फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक। इसी तरह आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जब यही लाइट रे बेंड होने के बाद जब ये इमर्ज हुई, द इमर्जेंट रे फ्रॉम दिस ग्लास स्लेब, इट हैज़ मूव्ड अवे फ्रॉम द नॉर्मल,
ठीक है। अब यहाँ पर ये रिफ्रैक्टेड लाइट रे है, इट शुड हैव ट्रैवल्ड लाइक दिस इन दिस डायरेक्शन, लेकिन इट हैज़ ट्रैवल्ड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक, जब ये इमर्ज हुई इट मूव्ड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सो वी कैन से जब लाइट रे एक डेंसर मीडियम से रियरर मीडियम की तरफ जाती है, लाइट रे जो है इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। फर्स्ट पॉइंट, जब लाइट रे एंटर करती है फ्रॉम दिस रियरर टू डेंसर, इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। जब डेंसर से रियरर की तरफ जाती है इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। The angle between the incident ray and the normal is simply perpendicular to the point of incidence, इसको हम कहते हैं angle of incidence, and the angle between the refracted ray and the normal is known as the angle of refraction। और जो एंगल बनता है बिटवीन द इमर्जेंट रे एंड द नॉर्मल, अगर हम एंगल ऑफ दिस पॉइंट ऑफ इमर्जेंस पे जहाँ से लाइट रे ऑफ ग्लास स्लैब से बाहर आ रही है, एक नॉर्मल यहाँ पर भी डालें, सो एक एंगल बनेगा बिटवीन द इमर्जेंट रे एंड द नॉर्मल, दैट इज़ द एंगल ऑफ इमर्जेंस। Once I will again say you that the angle of incidence and angle of refraction are not equal, but the angle of incidence and angle of emergence are equal. One point. Second, this incident ray and the emergent ray will be parallel to each other. जो incident ray है और emergent ray जो है they will be parallel to each other. So first case, जब obliquely एक लाइट रे पड़ती है गिलास स्लेब पे, इसमें रिफ्रैक्शन होगी, रिफ्रैक्शन विल बी देयर, बेंडिंग ऑफ लाइट विल बी देयर, और बेंड होगी लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल, और यही रे जब बाहर आएगी फ्रॉम द ग्लास स्लेब इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सो लाइट रे जब आती है फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, व्हेन इट मूव्स from denser to rarer medium it bends away from the normal। अब सेकंड केस है कि अगर अब लाइट रे एग्जैक्टली एट 90 डिग्री इंसिडेंट हो रही है सरफेस पे, देन व्हाट वी विल सी देयर विल बी नो डिविएशन इन द पाथ ऑफ द लाइट जो है दैट विल ट्रेवल द स्ट्रेट पाथ। नाउ वी विल मूव टू द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। The laws of refraction are simply known as the Snell's law. So in the laws of refraction, when we discuss about the laws of refraction, we have to consider the two medium where which will have different optical densities or refractive index. The two medium with two different optical densities, the laws which govern them are known as the bending of light occurs, and the laws which govern this bending of light are known as the laws of refraction or simply Snell's laws. Now the first law is the incident ray, the refracted ray and the normal at the point of incidence all lie in the same plane. The incident ray, the normal and the refracted. You see here the incident ray, the normal and the refracted ray. We can draw all these in a single plane. So the first law of refraction is the incident ray, the normal to the point of incidence and the refracted ray all lie in the same plane. So the first law states this, that the incident ray, the refracted ray and the normal all lie in the same plane. And the second law is the most important law, and mostly this is known as the Snell's law, is that the ratio of the angle of incidence to the ratio of angle of refraction is always constant. So we can say the sine of the angle of incidence, the ratio of the sine of the angle of incidence to the angle of refraction is always constant. What does that mean? अगर हम मान लीजिए एंगल ऑफ इंसिडेंस लेते हैं 30 डिग्री और मान लीजिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 20 डिग्री है, फिर हम चेंज करेंगे, उसका जो वैल्यू आएगा से दैट्स एक्स,
इसी तरह अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस अब लेंगे, से फॉर एग्जांपल 50, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से फॉर एग्जांपल 40, इसका वैल्यू और पहले केस का वैल्यू जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 था, फिर हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस 50 लिया, उसी तरह से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन चेंज होगा। इनका वैल्यू जो हमेशा होगा दैट विल बी ए कांस्टेंट। सो द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस to the sign of angle of refraction, that is always constant, or this is the second law of refraction, that is the sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is always constant for any two mediums, for any two mediums जो हमारे पास given, for example here we have consider air and water। अगर हम air और गिलास को consider करेंगे it will change, लेकिन air और गिलास में जो भी हम values लेंगे इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस के, जब हम उन्हें चेंज करेंगे, हमेशा जो हर एक एंगल जो भी हम चेंज करेंगे, साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इट विल ऑलवेज बी कांस्टेंट फॉर एनी टू गिवन मीडियम्स जो हमारे पास होंगे उनके लिए। सो इट विल बी फॉर आयर एंड वाटर इट विल बी डिफरेंट, फॉर आयर एंड गिलास इट विल बी डिफरेंट। सो द फर्स्ट लॉ वाज the angle, the incident ray, the refracted ray and the normal to the point of incidence all lie in the same plane. Second law, the sine of the angle of incidence to the sine of angle of refraction and to the sine of angle of refraction is always a constant for any two given mediums.